Good morning, dear student. Now in today's class, we are going to discuss about the third one type of rocks, that is metamorphic rocks. Okay. In the previous class, we discussed the types of rocks. This hard surface, tough earth crust is known as what? Rock. And this rock is a storehouse for the minerals. So in that class, we are already discussed about the three different types of rocks. There are the three types of rocks: igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. So in the previous class, we already discussed about this igneous rock, that the different examples of igneous rock, and we also discussed the sedimentary rocks and four different examples of this sedimentary rocks, that the sandstones, conglomerates, swell, and limestone. So now the third one, that is metamorphic rocks. So now today's class is about what? The third type of rocks, that is metamorphic rocks. So in today's class we are going to discuss about metamorphic rocks, means how it is formed, what are the main types of minerals found in this metamorphic rocks, and what are the uses of metamorphic rocks. So metamorphic, this metamorphic means what? ट्रांसफॉर्मेशन है ना, चेंज होना, रूपांतरण होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? मेटामॉर्फोसिस. सो दिस metamorphic rock, this is a transformation of this sedimentary rocks. When due to high temperature and pressure, this sedimentary rocks is formed, transformed, and formed a new type of rock, that is called the metamorphic rocks. So generally metamorphic rocks means what? The rocks which is formed by the metamorphosis, by the process of metamorphosis, or by the transformation of sedimentary rocks. So now see in your textbook, page number 45, the third type of rock, that is metamorphic rocks. Third type जो rock का तीसरा types है, third, वो हम पढ़ेंगे आज metamorphic rock. Okay. Metamorphic rocks are formed due to the change in the existing rocks over time. यानी जो दोनों exist rocks है ना, this or this both rocks, okay, either it is a igneous rock or sedimentary rocks, due to high temperature and pressures, काफ़ी समय के निकलने के बाद में काफ़ी टाइम पास हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यही दो रॉक्स होती है ना, igneous rock और sedimentary rocks, धीरे धीरे ना अपने फॉर्म चेंज कर लेती है ना. इट फॉर्म्स द थर्ड टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ रॉक विच इज कॉल्ड व्हाट? दिस मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? मेटामॉर्फोसिस, है ना. आप नेक्स्ट 8th क्लास में या बड़ी क्लास में जाओगे तो देयर यू कैन स्टडी अबाउट मेटामॉर्फोसिस, है ना. ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक चेंजेस, यानी अचानक से सर्टन बदलाव आ जाना, चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ओके. So this rock is formed due to change in the existing rock, means already जो exist कर रही है ना, this igneous rock और sedimentary rocks, इसमें कुछ changes आ जाता है. Due to that change it forms new type of rock, and that rock is called metamorphic rock. They can be formed from the sedimentary or igneous rock due to high temperature and pressure. As I told you that due to this high temperature and pressure, okay, due to high temperature and pressure, this metamorphic or sedimentary rock are transformed into what? New type of rock, that is called what? Metamorphic rocks. So by the transformation of what? Sedimentary rocks or igneous rock due to high temperature and pressure, it forms a new type of rock, that is called metamorphic rocks. Now it's very easy that due to high temperature and high pressures over the long time period, this existing rocks transformed or changed into new type of rock, which rock is known as which is formed by this transformation due to high pressure and temperature. That rock is called metamorphic rock. Okay, it's very clear, है ना. ऑलरेडी पहले से जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण लंबे समय के बाद, एक लंबे पीरियड के बाद में ये चेंज हो जाती है. इसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कायांतरित. कायांतरित मीन्स इसका
फॉर्म चेंज होता है, रूप चेंज हो जाता है ना, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो इट इज नोन एज वाटर मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ we are going to discuss about the different examples of this metamorphic rock. So first one is water, this marble. Marble, you know, it's a very famous among all, we are very well known example, this marble. मार्बल के लिए तो यू नो दैट किशनगढ़, अजमेर, राजगढ़ है ना, राजसमंद, दिस जालोर, और जालोर में भी ना मार्बल के बहुत सारे फैक्ट्रियाज हैं. तो ये जो एक तरह से ना किशनगढ़ है, मकराना है, राजगढ़ है, राजसमंद है, किशनगढ़, ये सब क्या है, मार्बल हब है, मार्बल की फैक्ट्री है, मार्बल का एक तरह से आप बड़ा केंद्र, सेंटर मान सकते हो ना. तो मार्बल जो है दैट इज water metamorphic rock, and this marble, it is formed from the sandstone. This sandstone है ना, this sandstone is a type of water sedimentary rocks, और ये sedimentary rocks when it is transformed due to this high pressure and temperature it take the shape of a marble. Okay, ये sandstone जो है, sorry, limestone. Okay, so by mistake it's not a sandstone, it's a limestone. Okay, this limestone change into water marble. जो लाइमस्टोन होता है जिसमें मोस्टली कैल्शियम होता है, एंड दिस मार्बल जनरली इज नोन एज CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट. मार्बल को क्या कहता है ना, साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, दिस मार्बल इज नोन एज अ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्योंकि इसमें मोस्टली कैल्शियम होता है. ओके, सो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेडिमेंटरी रॉक्स limestone due to high pressure and temperature it take the shape of water marble. So marble is a type of a metamorphic rock which is formed by the limestone. Okay, a sedimentary rock, which one, this limestone, and this sedimentary rock is changed into marble which forms a metamorphic rock. Okay, so mostly question भी होता है कि the marble is formed by what, so marble is formed by the limestone. लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक है और मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है. ओके, दिस इट इज यूज फॉर मेकिंग द स्टेच्यूज, फ्लोर्स एंड स्लैब्स ना, स्लैब्स फ्लोर बनाने के लिए, बड़े बड़े स्टेच्यूज बनाने के लिए ना, टेम्पल बनाने के लिए है ना, दिस बड़े बड़े ना बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल, एंड दैट मार्बल इज वाटर कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर लाइमस्टोन. लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में. सेकेंड वन इज द स्लेट. स्लेट, दिस इज स्लेट, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्रॉम द सेल. दिस थर्ड वन, दिस सेल इज चेंज इनटू वाटर slate. Okay, cell, this formed by the very fine particles, clay particles joined together, cemented together, it forms shell. So cell is a sedimentary rocks, and this sedimentary rock cell is transformed into new form, that is slate, and slate is what, metamorphic rocks. तो ये slate जो किससे बना, सेल से बना. तो एक टाइप की रॉक जो है वो दूसरे टाइप में चेंज हो गई, इसलिए इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. तो स्लेट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द शेल. Both shell and the slate can be split into thin layers. It is used for making the blackboards and handheld writing boards. Means जो slates होते हैं ना, छोटे बच्चे जो लिखते हैं जिसके ऊपर वो slates होती है, that slate is made up of this slate which is formed by the shell. Okay, next one, yes. Genus, it is formed from the granite. This is formed by the granite, and granite is a type of water, this igneous rock. So this granite is changed into genus. Okay, means ये क्या है, igneous rock है, और igneous rock granite की form जो है वो change होती है genus से, G से G. Okay, so it is formed from the granite. इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स. इसमें ना कुछ लाइट और डार्क कलर के बैंड्स भी होते हैं, स्पॉट होते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन साइट, और ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है बिकॉज इट इज अ फॉर्म्ड ऑफ दिस हार्ड ऑफ ग्रेनाइट. देन क्वार्ट्जाइट्स, नेक्स्ट वन.
quartzites, it is formed from the sandstone. This sandstone, changed into this quartzites. Okay, ये एक ना sedimentary rocks है sandstone. Sandstone से क्या बनता है? Quartzites. Quartzite. Okay, this quartzites is formed from the sandstone. It is a very hard rock. ये भी काफी tough hard rock होता है, and it is used for water making a glass and jewelries. This quartzite, because it has a shiny appearance, so by the cutting and by polishing, this quartzite is used for making different types of stones, which is used in water jewelry. Okay. So you can see that the different types of all the different types of metamorphic rocks. This marble. So this marble is a transformation of water. This limestone, then slate. This slate is a transformation change from a sal to slate. Then this genus is transformed from the granite, and last one is quartzite. Quartzite is the transformation of this sandstone, which is what sedimentary rocks, and it will form new form, which is what metamorphic rocks. So metamorphic rocks means this rock which formed by the transformation of existing this igneous or sedimentary rocks due to high pressure and temperature over a long time period. So it forms what a new type of rock, which is known as a metamorphic rock. Now see, now next one we discuss about what minerals. Okay, so this is all about the three different types of rocks: igneous rocks, sedimentary and metamorphic rocks. Now today's we discuss about this four different type of rocks. Marble is made up of limestone. Slate is formed by the shell. This genus is formed by granite, and this quartzite is formed by the sandstone. Okay, this marble generally it is known as a calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. As a past example of this marble is what that Taj Mahal, and बड़े बड़े ना आपने टेम्पल भी देखे होंगे, घर में भी अपन मार्बल फ्लोरिंग बनाते हैं. ओके, फिर है स्लेट है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द राइटिंग बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स, एंड स्लेट जीनस. दिस ऑल्सो हार्ड टफ dark patches, bands color, so it is also used for construction site. And this quartzites, it's a use for making glass and jewelries, because it has a shiny appearance and a shiny surface. So now here one exercise is given to you. Let's recall, fill in the blanks with the correct word. So now we discuss the rocks are mostly made up of minerals. First one. Now we see, everybody see the page number 46. Let's recall, fill in the blanks. So we discuss about that exercise. So now everybody see in your textbook page number 46, one exercise is given here. Just let's recall, fill in the blanks with the correct word. So now we are going to discuss this exercise. So first one, fill in the blanks. Rocks are made up of the two options is given here, soil and mineral. So we already discussed that mostly the rocks are made up of minerals. So what is the answer? Minerals. Second one option, minerals. So rocks are made up of minerals. Second one, when hot molten rocks flows out to the earth surface, it is called what? So it is called lava, because when it comes out, flow out of the earth crust, है ना, earth crust से बाहर जो when hot molten rocks flow out of the earth crust, so it takes the shape that is called what? Lava. But when it is inside the earth crust in the hot molten form, then it is called what? Magma. So second one answer is lava. When it comes out, hot molten magma comes out through the earth's surface by the opening of volcanoes, that is called lava. But जब वो अंदर होगा liquid form में होगा तो वो magma होगा. About 95% of the earth crust is made up of, है ना, 95% of earth crust is made up of igneous rock. So answer for third one is the second option, igneous. Fourth one, shell and sandstone are the example. Just हमने discuss किया. These are the types of sedimentary rocks. Okay,
तो शेल से जो है ना स्लेट बनता है, और सैंडस्टोन से आपका क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म बाय दिस सैंडस्टोन, ग्रेनाइट. So it is a sedimentary rock. So answer of fourth fill-up is what? Sedimentary rocks. Last one, fifth fill-up. Marble is formed from. Marble is formed from what? Limestone, है ना. Limestone जो है आपका जो है वो sedimentary rocks है, और उससे जो marble बनता है वो आपकी metamorphic rock है. तो this marble is formed by the limestone, and mostly this limestone contain what? Calcium. Example of metamorphic rock, that is a marble, and this marble is made up of this limestone. So these are the answer of this exercise. So everybody, you fill up in your textbook. Okay, now next we are going to discuss about the minerals. So as I told you that minerals means these are the materials, as we discussed that all the rocks, all these different types of rocks, igneous rock, either it is sedimentary rocks or it is metamorphic rocks. So these all three rocks are made up of what? Minerals. So all rocks are, everybody see in your textbook, page number 46, minerals. All rocks are made up of the minerals. Minerals are the chemical substances that are occurred naturally on the earth crust. And what are the minerals? These are the natural substance. Okay, ये क्या है? ये naturally पाए जाने वाले substance है जो naturally occurs in the earth crust, जो ना जमीन में earth crust में naturally पाए जाते हैं. So this chemical substance is known as what? Minerals. Minerals can be the metallic and non-metallic, and these minerals can be classified into two categories: non-metallic and metallic. Example of metallic means metals, all kinds of the metals, just like gold, iron, copper, zinc, silver, etc. These all are the examples of metallic minerals. These are the examples of metallic minerals. And examples of non-metallic minerals. Non-metallic minerals means like coal, petroleum, coal, na, calcite, gypsum. This all are what? Non-metallic. Okay, so means which forms the metal that minerals is called metallic minerals, and non-metallic means जो non-metals हो. Okay, so there are the two different types of minerals, metallic and non-metallic. Metallic, just like gold, silver, iron, aluminium and copper are the some examples of metallic minerals, and which is used for what? For making jewelries, for making the wires, for making the machinery tools, and for making the utensils, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, wires बनाए जाते हैं, machinery parts बनाए जाते हैं, jewelries बनाए जाते हैं. This all are the what? Metallic minerals. On the other hand, just like calcites, gypsums, feldspar, mica, coal and petroleum, these are considered as a what? Non-metallic minerals. Coal and petroleum, both coal and petroleums are very valuable non-metallic minerals which is used as a source of fuel. क्यों ये ना, these are the considered as a what? This coal is considered as a black gold. Why it is? क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वैल्यू है. These are the most important source. आज के ना डे में यदि आप जिस कंट्रीज के पास ज़्यादा पेट्रोलियम है, ज़्यादा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता निकाला जाता है, वो उसकी इकोनॉमी सबसे टॉप पे होती है ना, क्योंकि ये फ्यूचर फ्यूल है. इस कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है डिपेंड करती है कोल और पेट्रोलियम और एनर्जी सोर्सेज पे, क्योंकि आज जितनी भी आप इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज देख रहे हो वो टोटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी सोर्स. यदि एनर्जी सोर्स नहीं होगी तो वो फैक्ट्री इंडस्ट्री सब बंद हो जाएगी. ओके,
सो कोल एंड पेट्रोलियम जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, दिस आर कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, दे आर डग आउट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द माइंस एंड द वेल्स. पेट्रोल जो है वो वेल्स, जैसे पानी के अपने बोरवेल और ट्यूबवेल करते हैं, उसी तरह से ना वेल्स कुआं खोद के ना ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे देश, इन आवर कंट्रीज जस्ट लाइक अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई, आसाम दिग्बोई, ये कुछ प्लेसेस है वहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं. राजस्थान में भी है, बाड़मेर में है ना, मंगला, ऐश्वर्या, यहाँ पे भी जो प्रोसेसिंग चल रही है. ओके, जहाँ से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल है ना, पेट्रोलियम. दे आर डग आउट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अर्थ एंड माइंस. कोल की भी क्या होती है, बड़ी बड़ी माइंस होती है जहाँ से, जस्ट लाइक बिहार, झारखंड है ना, रायबरेली है ना, बोकारो, जमशेदपुर, यहाँ पे ना बहुत सारे क्या है, कोयल की माइंस है जहाँ से कोयला निकाला जाता है. So now we are going to read about the coal and petroleum in a detail. Coal is a kind of the sedimentary rocks. This coal is a sedimentary rocks which is formed by the millions of the years ago. The earth was covered with a thick swampy forest. Means ना काफी हजारों लाखों साल पहले ये पूरा अर्थ क्रस्ट जो ना जंगल, बिल्कुल घना जंगल था ना, swampy forest, dense forest था. When plants died, they fell into the swampy and got buried. लेकिन किसी ना बाय द नेचुरल फिनोमिना उसके कारण क्या हुआ, भूकंप के कारण या कुछ और भी प्रॉब्लम के कारण क्या होगा, ये पूरे जंगल बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस गए, उसके ऊपर मिट्टी आ गई और ये नीचे चलते गए, दबते गए. और ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्लोली इट्स चेंज इनटू वाटर कोल. So due to high temperature and pressures, these plants get converted into coal. Coal is used as a fuel for the cooking, for producing electricity, and in a steam and a engine or running the many types of boilers and factories. So how it is formed, this coal? Coal is formed by the process of carbonization. And carbonization में क्या होता है कि ना लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले क्या था कि अर्थ क्रस्ट ना काफ़ी घना जंगल था. सो बाय द शेकिंग, बाय द मे बी अर्थक्वेक और दूसरे किसी भी नेचुरल फिनोमिना के कारण, नेचुरल कैलिमिटीज़ के कारण क्या हो गया, ये पूरा घना जंगल ऐसे कैसे ज़मीन के अंदर धंस गया. सो बाय द डिपोजिशन, बाय द सेडिमेंटेशन क्या हुआ, उसके ऊपर मिट्टी आती गई, लेयर बनती गई और वो नीचे दबते गए. और जैसे आपको पता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा नीचे जाएगी उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करेगा. सो ड्यू टू दैट इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट प्लांट contains one things that is called cellulose. So that cellulose slowly change into this carbon content and it forms water coal. And this coal is a source of water energy. It is used for the fuel, for the cooking purpose, for producing electricity in a thermal power station. It is used to run the steam engine and the boilers in the factories and industries. Okay, so this all about this coal. Next one, petroleum. इट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड है ना. इसको क्रूड ऑयल, कच्चा काला तेल भी कहते हैं ना, रॉक ऑयल है क्योंकि पेट्रो मीन्स वाटर, पेट्रोलियम दिस वर्ड इज derived from the two words petro and oleum. Petro means rocks and oleum means oil, means the oil which is extract from rocks ना, चट्टानों में से जो तेल निकाले जाता है उसको कहता है पेट्रोलियम. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड सी एनिमल्स विच गॉट ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. तो ये कैसे बने, जो समुद्र में, ओशियंस में, महासागरों में जो सी क्रिएचर्स थे वो पानी सूखने के कारण, किसी कारण से ना, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण पानी सूख गया और वो सभी जीव जंतु ना, प्लांट्स और सब जमीन के अंदर दब गए और दबने के कारण उनसे जो लिक्विड मटेरियल बना वो था पेट्रोलियम. It is mostly used as a fuel in a different forms like petrol, diesel, kerosene and a liquefied petroleum gas like LPG. So by this purification or by the refining of this coal, crude, this not coal, this crude oil or black oil, जिसको अपन पेट्रोलियम कहते हैं. पेट्रोलियम इज ए वाटर, इट्स a hydrocarbon, it's a mixtures of different things. Okay, ये काला तेल क्रूड जो है इसको प्यूरिफाई करने के बाद इसमें से अपन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी ये सब सेपरेट करते हैं. पहले ये कच्चा काला तेल होता है ना, गाढ़ा बिल्कुल है ना, ब्लैक कलर का, जिसको अपन कहते हैं क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल, या रॉक ऑयल या ब्लैक गोल्ड.
So this by the purification, by the refining of this petroleum, we can obtain the petrol, diesel, kerosene and LPG gas. It is also used for the dry cleaning, and this things petroleum is also used for the many other purpose like dry cleaning. So it is all about this non-metallic minerals, and the most valuable two minerals, that is coal and petroleum. Okay, so I think in today's class is over. Enough for you. So in the next class we are discuss the last topic, the uses of rocks and minerals, and remaining exercise. Okay, so if in today's class, if any doubt, any problem, you can ask me through the WhatsApp group, and we also arrange Google Meet class. In that class you can clear your doubt. Thanks. Have a nice day.